Hello बच्चों, let's read the question. Select the true and false statement. 1. If the DNA molecule has 2000 base pairs, then the number of sugar, okay, so 2000 base pairs, then the number of sugar will be 6000 and phosphate will be 3000. Okay, so first statement here हो गया. Second statement, a nucleotide molecule consists of nitrogenous base, pentose sugar, and a phosphate molecule. Okay. Third, site of DNA replication in a cell is cytoplasm. So DNA replication cytoplasm में हो रहा है. And fourth, semi-conservative replication of DNA has been proved in bacteria as well as in plants. And these are the options. So this question is from the concept of nucleic acid, to be specific, deoxyribonucleic acid. Key concept is nucleic acid. Okay. चलो तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं. If the DNA molecule has 2000 base pairs, now 2000 base pairs, one base pair has two nucleotides. ठीक है, एक बेस पेयर में दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं. एक बेस पेयर को मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. सपोज वी आर हैविंग 80, दिस इज अ बेस पेयर, एंड इफ यू आर हैविंग GC, तो दिस इज आल्सो अ बेस पेयर. नाउ अब देख लो, एक बेस पेयर में दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, राइट? तो वन बेस पेयर हैज टू न्यूक्लियोटाइड्स. नाउ इधर आपको बोला है कि देयर आर 2000 बेस पेयर्स, दैट मीन्स 2000 बेस पेयर्स का मतलब हो गया 4000 nucleotides, right? Now every nucleotide has got one sugar. ठीक है, हर न्यूक्लियोटाइड के पास one sugar प्रेजेंट होती है. एंड क्वेश्चन में बोल रखा है कि देयर आर 6000 sugars, right? Let me write it down. So every nucleotide, let me tell you कि एक न्यूक्लियोटाइड किस चीज से कंपोज्ड होता है. वन न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ अ, सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस, राइट? नाइट्रोजनस बेस, देन देयर इज अ शुगर मॉलिक्यूल एंड अ फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, राइट? सो आपके क्वेश्चन में बोल रखा है कि 2000 बेस पेयर में 6000 शुगर होगा एंड 3000 फॉस्फेट होगा, विच इज रॉन्ग. बाय बिकॉज आई टोल्ड यू हियर कि यू हैव 2000 बेस पेयर में 4000 न्यूक्लियोटाइड्स. नाउ 4000 न्यूक्लियोटाइड्स आर गोइंग टू हैव 4000 nitrogenous base, 4000 sugar and 4000 phosphate group. So 4000 bases, nitrogenous bases, and 4000 sugar and 4000 phosphate group. So आपका statement 1 तो हो गया wrong, because यहाँ पे इन्होंने 6000 sugar बोल रखा है and 3000 phosphate बोल रखा है. So this is a false statement. Let me write it down here. Okay. Statement 1 is false. So let's see second one. A nucleotide molecule consists of a nitrogenous base, pentose sugar and a phosphate molecule. Here I've told you कि एक nucleotide किस किस चीज से composed होता है. It is a nitrogenous base, a ribose sugar and a phosphate group. So this is a true statement. You write it down. True है ये, ठीक है. Site of DNA replication in a cell is cytoplasm. Now this is a wrong statement. क्यों? क्योंकि DNA replication हमेशा न्यूक्लियस में होती है. Where it takes place? It always takes place in the nucleus. So DNA replication जो है वो कहाँ पे आकर करता है? It takes place in the nucleus because enzymes for replication are present in the nucleus, right? So this is also a false statement. Let's see कि आपका statement 4 क्या कह रहा है कि semi conservative replication of DNA
has been proved in bacteria as well as in plants. So yes, this statement is true because semi-conservative replication of DNA किसने discover किया था, demonstrate किया था? So this was demonstrated by Michelson and Stoll experiment, and later it was proved कि higher organisms such as plants, उनमें भी each strand in DNA molecule serve as a template for synthesis of a new complementary strand. अब तो ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल हर ऑर्गेनिज्म में डेमोन्स्ट्रेट हो चुका है. सो यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. Okay, so we have FT and FT. FT and FT. So your second is the correct option. Let me write it down that the correct option is second. And with this, I hope you understood this question well. Thank you and best of luck.